Good morning, students. I'm back with the rest of the part of the story that we'll study today. We'll cover some more paragraphs. So I hope you all have understood till now. Okay. The name of the chapter is Meeting Cezanne. Okay. This is a story of a small boy whose name is Yannick. वो जाता है एक जगह है प्रोवांस, वहाँ जाता है. He goes to Provence to live with his uncle for a few days. Okay. And there he helps his uncle and his daughter, means the uncle's daughter, Yannick's cousin. Her name is Amandine, at the inn of the uncle. Okay, so there's this special customer who is to visit the inn, and Amandine asks Yannick to clean everything very properly. So the customer is about to come, and Yannick is confused. He asks Amandine that who is the customer, what is he famous for, and Amandine just shouts at him, says, "You are always asking questions." तुम्हारे पास हमेशा questions ही रहते हैं, सवाल ही रहते हैं, कभी तुम बिना सवाल किए काम नहीं करते हो. She shouts at him, and she sends him to fetch the logs, to bring the logs. Okay. So the customer comes. According to Yannick, he's a very ordinary looking man. He does not seem very famous or very beautiful or very smart or very tall. Nothing as such. He's a very ordinary looking man, and he has less hair on his head. Okay. So this special customer, he likes the creme brulee, that is a dessert that Yannick prepares for them after the dinner. So he likes it particularly. And then he goes away. So what happens that after the best customer and his friends leave, Yannick, like he always does, he just pulls off the paper tablecloth on which they have eaten, and he crushes the paper tablecloth and throws it in the fire. Okay. So Amandine, his cousin, she is very angry at this act and runs with the tongs towards the fire to pick up the remaining parts of the burning paper. But what happens, क्या होता है कि she is very late. The paper has already burnt, and she cannot pick out any of the remaining part of the tablecloth. So she shouts at Yannick कि ये तुमने क्या किया? You are such an idiot, you little fool. Okay, she almost starts crying, and she tells Yannick that what was there in the paper. She tells him that this special customer, he is the best painter in the world, and whenever he likes the meal, he leaves a picture, a hand-drawn sketch on the tablecloth, paper tablecloth for her father, for Yannick's uncle, as a tip. Okay. So Yannick does not know all this. When Yannick asked Amandine that what is he famous for, she did not tell him. So Yannick does not know all these things, and as usual, like he does for all the other customers, he just picks the tablecloth and throws it in the fire. So Yannick is quite confused. When Amandine starts crying, he thinks that what should he do now? Till then, what happens that Uncle Bruno, Yannick's uncle and Amandine's father, his name is Bruno, वो आते हैं और वो he's a very jolly person. वो काफी खुशमिजाज इंसान है. He keeps smiling always. He's very jolly. But this time he does not seem so. Okay. So वो आते हैं दोनों बच्चों के पास and आके पूछते हैं what has happened. So now we'll study the rest. Paragraph 8, page 2. Sorry, paragraph 9, page 2. It was Yannick, Papa, she cried. He threw it into the fire, the tablecloth, the drawing. So what happens? Amandine जो है, she shouts and tells her father, that मैंने नहीं किया पापा, it was Yannick. Yannick threw the tablecloth in the fire. The tablecloth, the painting, the drawing. Okay, she tells her father. Did you tell him about it, Amandine? So Uncle Bruno, he is very considerate towards Yannick. वो काफी considerate हैं Yannick की तरफ. He has sympathy for him. And he asks Amandine, क्या तुमने उसे बताया था कि उस टेबल क्लॉथ पे क्या रहता है उसके फेंकने से पहले? क्या तुमने उसे बताया था कि उस टेबल क्लॉथ पे एक ड्राइंग रहती है? So Amandine is speechless. Uncle Bruno asked, did Yannick know that he sketches something on the tablecloth and leaves it behind for us? So Uncle Bruno asks Amandine
दैट क्या तुमने उसे बताया था, डिड यू टेल हिम अबाउट इट, क्या तुमने उसे बताया था कि दैट पेंटर, दैट पर्सन, he draws something on the tablecloth when he goes and leaves it behind for us if he likes the meal. Did you tell him? So Amandine is like, she did not tell him. No, उसने तो यानिक को बताया नहीं था. So what happens? Amandine looked at me, her cheeks wet with tears. I thought she was going to lie, but she didn't. So what happens? This Yannick, he thinks that Amandine was going to lie. अब जब वो पकड़ी गई है कि उसने तो बताया नहीं था Yannick को, so Yannick thinks that she will lie to Uncle Bruno that मैंने बताया था लेकिन फिर भी इसने फेंक दिया. And her cheeks are wet, उसके गाल भीगे हैं because she was crying. Her cheeks are wet with tears. So what happens that अंकल ब्रूनो पूछते हैं और यानिक को ऐसा लगता है कि वो झूठ बोलेगी, लेकिन अमेंडीन यानिक की तरफ देखती है एंड शी सेज नो पापा, शी सेड लोअरिंग हर हेड, लेकिन वो सच बोलती है. शी सेज दैट शी हैड नॉट टोल्ड यानिक, शी सेज नो पापा, ठीक है, और अपना सर नीचे कर लेती है. सो व्हाट हैपेंस देन? यू शुडंट, व्हाट डज अंकल ब्रूनो से? अंकल ब्रूनो सेज देन यू शुडंट ब्लेम हिम, शुड यू, फॉर समथिंग दैट वाज योर फॉल्ट. से सॉरी टू यानिक नाउ. तो क्या होता है कि अंकल ब्रूनो, जैसा कि मैंने कहा, ही इज वेरी कंसिडरेट टुवर्ड्स यानिक. ही सेज दैट तो जब तुमने उसे बताया ही नहीं कि उस टेबल क्लॉथ पे रहता क्या है, तो क्या तुम्हें उसे ब्लेम करना चाहिए? इज इट राइट ऑन योर पार्ट टू ब्लेम हिम फॉर समथिंग दैट इज योर फॉल्ट बिकॉज यू डिड नॉट टेल हिम? तुमने तो उसे बताया नहीं कि उस टेबल क्लॉथ पे क्या रहता है. यू डिड नॉट टेल हिम. So is it his fault that he threw the tablecloth in the fire? He did the usual work that he used to do. उसका तो वो काम है, वो हमेशा वो करता है, टेबल क्लॉथ उठा के फायर में फेंकता है, उसने फेंक दिया. अब तुमने जब उसे बताया नहीं था तो तुम उस पर क्यों चिल्ला रही हो? Why are you shouting at him? It is your fault. And he asks, Uncle Bruno asks Amandine that say sorry to Yannick now. Yannick को अभी sorry बोलो. So she mumbled it but didn't raise her eyes. Uncle Bruno put his arm around me. तो अमेंडीन क्या करती है, उसको थोड़ा बुरा लगता है अमेंडीन को, तो because her father scolded her. Okay, so she mumbled. Mumbled means to say something in a very low voice. एकदम धीरे से बोलना ताकि सामने वाले को सुनाई भी ना दे, समझ भी ना आए कि इंसान ने क्या बोला है, ठीक है. So she mumbled sorry. उसने बहुत धीरे से सॉरी बोला, बट डिडंट रेज हर आइज, और उसने अपना सर ऊंचा नहीं किया, अपनी आंखें ऊपर नहीं की, ठीक है. शी वॉज लुकिंग डाउनवर्ड्स ओनली. अंकल ब्रूनो पुट हिज आर्म अराउंड मी. अंकल ब्रूनो ने यानिक के कंधे पे हाथ रखा. ही सेड नेवर माइंड यानिक, ही सेड ही पर्टिकुलरली लाइक्ड हिज क्रेम ब्रूले. यू मेड इट, डिडंट यू? सो द ड्राइंग वॉज फॉर यू, रियली. ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड. सो अमेंडीन ने इसको यानिक को क्या बताया होता है कि whenever he likes this special guest, he likes the meal, he just leaves a drawing on the tablecloth as a tip for his father. अब फादर के लिए क्या टिप होती है कि फादर ने ड्राइंग बनाई होती है, फादर ने खाना बनाया होता है, तो फादर के लिए वो ड्राइंग एज अ टिप काम करती है. लेकिन इस बार जो क्रेम ब्रूले था जो कि यानिक ने बनाया था वो उनको पसंद आया था स्पेशल गेस्ट को, ठीक है. ही लाइक द क्रेम ब्रूले, उनको क्रेम ब्रूले पसंद आया था जो कि यानिक ने बनाया था. सो अगर प्रॉपरली देखा जाए तो जो ड्राइंग थी, जो पिक्चर उन्होंने बनाया था टेबल क्लॉथ पे, इट वॉज फॉर यानिक एंड नॉट फॉर अंकल ब्रूनो. अंकल ब्रूनो के लिए तो वो था ही नहीं, वो तो यानिक के लिए था क्योंकि ही लाइक द क्रेम ब्रूले दैट वॉज मेड बाय यानिक. सो व्हाट हैपेंस? Uncle Bruno explains this to Yannick and says, so you should not worry, you should always look on the bright side of things. तो तुमने Uncle Bruno is trying to explain Yannick that you should always look on the brighter side. It was not for me that he drew, it was for him, for you that he drew. Okay, so you should start looking towards the brighter side of things. That way, whatever the problem is, it will look smaller. It won't be suffocating you. उस problem से उतनी दिक्कत नहीं होगी अगर तुम bright side, positive side देखोगे, ठीक है. For a moment you held a drawing that was made for you by the greatest painter in the world. That's something you'll never forget. So Uncle Bruno क्या कहते हैं यानिक को? He says that कुछ ही पलों के लिए, for a moment, एक ही पल के लिए तुमने वो ड्राइंग पकड़ी थी जो तुम्हारे लिए बनाई थी वर्ल्ड के बेस्ट पेंटर ने. तुम्हारे लिए क्यों बनाई थी? बिकॉज यानिक ओनली मेड द क्रेम ब्रूले, राइट.
सो इट वॉज मेड फॉर यानिक. अंकल ब्रूनो यानिक को एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए तुमने वर्ल्ड के बेस्ट पेंटर की ड्राइंग जो उन्होंने तुम्हारे लिए बनाई थी वो अपने हाथ में पकड़ी थी. ठीक है. सो दैट इज समथिंग दैट यू विल नेवर फॉरगेट. तो अंकल ब्रूनो यानिक को कहते हैं उन्होंने तुम्हारे लिए ये चीज बनाई थी, तो दिस इज समथिंग दैट यू विल नेवर फॉरगेट. यू विल रिमेम्बर इट फॉर अ लाइफ टाइम कि वर्ल्ड के बेस्ट पेंटर ने मेरे लिए एक ड्राइंग बनाई थी और वो मैंने अपने हाथ में पकड़ी थी. ठीक है. सो दिस इज वेयर वी स्टॉप नाउ एंड वील रीड फ्रॉम पैराग्राफ 14 on in our next video. Okay, so tomorrow I'll be sending you the word meanings and word meanings of this chapter. Okay, you can write it in your copies, and then from Monday we'll continue our videos. Our video of we'll continue from paragraph 14. Okay, so for tomorrow you can just write the word meanings in your copy, put the name of the chapter, write the name of the author, and then you can write make columns for word meanings and write it. Okay, I'll be sending as it has to be written in your copy. Okay, so write it that way only. And if you have any query, any question, कोई भी question हो regarding the chapter, regarding how to write, how to work, you can put it down in the video in the comment section. Okay, so that I'll be giving you the answers and I'll be solving it, clearing your doubts. Okay, students, so I hope you all are understanding till now. This is an interesting chapter. I hope you all are understanding till now. Okay, so have a good day, students. Study well. Take care.